Hello everyone, I hope you are well. I am Sandeep and most welcome my dear friends at this YouTube channel. I hope you are well. Lot of people are saying that my dear friends, how we can improve my communication skill. Can you suggest me something at this topic? We want to learn English and I have not studied in English medium, college, institute. How we can improve my communication skill? How we can make fulfill in English my dear friends? How we can speak in English lot of us? Why we are not getting speak? And how we can think in English? How we can grow of our communication skill and how we can improve, how we can do conversation in English my dear friends, my dear brother. Because you have to need know, if you are a student and you are not studying in English medium school, I am telling to you before, you can watch of my video. If you want to speak my dear friends, you can watch to me. Also I am a learner and we are providing to you how you can improve, how you can think in English and how you can increase your confidence, how you can speak without hesitation on the stage, how you can learn English my dear friends, my dear brother and sister. You must watch to me and I hope you can do well, you can learn well and you can grow yourself. You would grow yourself my dear brother and sister. You have to recognize what are you doing my dear friends. Someone are saying, if we want to speak English, how we can speak? Who are you thinking in your mind my dear friends? You must think and you must focus at this talk. Who are you thinking in your mind my dear friends? You have to translate that words what you are speaking. You have to translate in your mind and you have to speak in English my dear friends. As I am going of my college and I met of my friends, they ignore to me but I not attend them. उन्होंने मुझे इग्नोर किया लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं दिया. वाई? बिकॉज इफ दे आर मिसबिहेविंग टू मी, व्हाट विल आई डू ऑफ देम? या दो लोग मेरे साथ मिसबिहेव करेंगे तो मैं उनके साथ क्या करूँगा? आई विल इग्नोर देम एल्सो. माई डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to put up a subject and you have to think how much we can speak of that subject, that topic my dear friends, my dear brother. If you want to learn English, you have to think before, then you would get to speak, then you would do something well. You must know that at this talk. If you are thinking I am getting speak something in, it is our own language my dear friends, who I am thinking in Hindi words and we are getting speak front to you. If you are a learner, you must know about yourself. Someone are cheating to you and you are watching them. Why? We must leave them. If they are cheat, if they are doing, if they are stand against with me, what will I do of them? My dear friends, if I will give you topic, you have to speak and you have to tell something about your friends, what you would say about them. You can count of them strength, quality, education, and you can say about of his behavior and about his habit. You must think. If you are watching to me my dear friends, you must think about, if I am giving to you topic, you have to speak and you have to say something about your friends my dear friends, what you would say and how you would start. If I would say of my about of my friends, first of all I would say about that quality. He is a good learner, he is doing well, his confidence level is so high and he want to achieve of his ambition. He is doing work properly and he is giving time for his ambition in his of his life. वो अपने जीवन में
कुछ बड़ा करना चाहता हो, टाइम दे रहा है अपने आप को, ही इज मैनेजिंग ऑफ हिज टाइम एंड ही गो कोचिंग फॉर देयर स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों के लिए वह कोचिंग जाता है, बिकॉज ये टीचिंग देम। माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं और आपको बोलने की, सबसे पहले आपको बोलने की आदत डालना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और क्या बोल सकते हैं। यदि आप लोगों को नियंत्रित कर पा रहे हैं, यदि आप कहीं पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, इफ़ यू आर कंट्रोलिंग ऑफ योर स्टूडेंट, आई थिंक डेट यू कंट्रोल एंड दिस वर्ड पीपल एनी वन एनी हुअर प्लेस। तो आई थिंक डेट आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस एंड ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसा क्या बोलते हैं डिसिप्लिन आपके पास है, अनुशासन है मेरे दोस्त। तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ एंड you have to live, you have to make, you have to live always in discipline in your life if you want to do something well in your life, my dear friends. After some time I think that what am I saying, what am I getting speak is right or wrong, my dear friends. तो I would like to say, यदि आप ऐसा सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, if you would think as what people would think, what people would think, you must think and you must leave everything till that you are not gaining well in your life, till that you are not achieving who are you doing and in which field you want to go, my dear friends. Till that you must not think everything you are think, every time you must think you are doing who everything is well, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो आपके जीवन में। लेकिन आई थिंक डेट यदि आप मैच्योर है तो यू वुड नॉट डू रॉन्ग एंड यू वुड नॉट डू रॉन्ग साइड, रॉन्ग वे इन योर लाइफ। आई थिंक दैट इफ यू आर मैच्योर एंड इफ यू आर watching to me after 12th, I think that you are think well and you can decide about your ambition, about your future, what you must do and how you can do well in your life. I think that lot of people are going to mature in this age. If you are watching to me, if you are getting understand to me, my dear friends, यदि आप मुझे सुन रहे हैं, यदि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो आई होप यू आर मैच्योर एंड यू आर वेल टू मी। आप मुझसे बेहतर हो सकते हैं, होंगे भी, आप मुझसे बेहतर हो सकते हैं। यू आर वेल टू मी एंड आई डोंट नो डेट व्हाट एम आई एंड व्हाट आर यू, बिकॉज I am saying always to you, compare yourself and check what are you, what is your strength, what is your weakness and how much you can remove your fear in your life and how you can make a well, how you can make powerful person in your life, because in this world only two people are going to listen. मेरे दोस्त, इस दुनिया, इस जहाँ में सिर्फ दो प्रकार के लोग सुने जाते हैं। यू मस्ट नो डेट एट दिस टाइम, एक जिसके पास वेल्थ है, दूसरा जिसके पास नॉलेज है। यू मस्ट नो डेट, यदि आपके पास नॉलेज है मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, लॉट ऑफ पीपल वुड गिव टाइम टू यू एंड दे वुड लिसन टू यू। यदि आपके पास गुड नॉलेज है, बेटर नॉलेज है, तो लॉट ऑफ पीपल वुड लिसन टू यू। यदि आपके पास धन है, संपन्न है, आपके पास लॉट ऑफ मनी है, तो लॉट ऑफ पीपल, यदि आप रॉन्ग भी कहेंगे, गधा कहेंगे, तो उसको लोग कहेंगे घोड़ा है। तो बिकॉज पीपल ओनली लिसन ऑफ टू पीपल हु हैव वेल नॉलेज एंड हु हैव वेल वेल्थ एंड मनी इन हिज लाइफ। यू मस्ट नो डेट, क्योंकि दुनिया सिर्फ दो ही लोगों के साथ में रहना पसंद करती है, एक उनके साथ में जिनके पास एक सुनहरा भविष्य होता है, और एक उनके साथ में रहना पसंद करती है मेरे दोस्त जिनके साथ में एक बेहतर नॉलेज होता है, बिकॉज दे वुड लिव ऑलवेज टू यू मस्ट नो डेट एंड यू मस्ट कंसिडर एट दिस टास्क इन योर एज समवन विल स्टैंड विथ यू बट इफ ही इज स्ट्रेंजर, यदि वह अजनबी है
तो वह आपके साथ में तब तक रहेगा जब तक वह आपके बारे में अच्छी तरह से जान नहीं जाता. टिल डेट he will live with to you, till that he would not know about to you totally. You must know that at this तक he would stand for to you that time. वह तब तक खड़ा रहेगा आपके साथ में जब तक आपके बारे में वह भली बात परिचित नहीं हो जाता है. जब आप वह समझ लेगा कि यू आर वेल, यू आर एज देम, आप भी उन्हीं की तरह हैं, तो ही लिव टू यू, वह आपको छोड़ देगा. एंड यू मस्ट नो डेट एट दिस टाइम. तो अपने आप को बेहतर बनाइए, क्योंकि लोग बेहतर के साथ में रहना पसंद करते हैं. पीपल लाइक टू लिव और बेटर एंड मेक yourself, my dear friends, my dear brother and sister, better yourself. It is not only for to you. I am saying always to you, in which people, in which person today, girl or boys, you are running behind of them, they would stay, they would leave to you. वह आपको छोड़ देगा, because everyone, if they are met ये best opportunity, they would leave to you, they would leave to you, must know that at this time. तो अपने आप को कुछ बेहतर बनाइए कि लोग आपसे जुड़े रहें. People always connecting with to you, you must know that at this time. And make as behaving not spreading of rumor between of people. लोगों के बीच में अफवाहें न फैलाएं. आप जानते हैं कि कट्टरता चल रही है इन दिस कंट्री. पीपल एट नॉट डिवाइडेड ऑफ इक्वालिटी इन दिस कंट्री ऑफ ह्यूमन्स. एंड यू मस्ट थिंक अबाउट ऑफ द ह्यूमैनिटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एवरीवन इज कैपेबल टू थिंक इट. सभी लोग सक्षम है कि क्या सही है और क्या गलत है. मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, and if you are watching to me, you can keep your thoughts in the comment section. I don't know that what am I telling to you and what am I speaking to you and how am I getting speak. I am well or I am bad, I don't know that, but you can, if you are watching to me, you can keep your thoughts in the comment section. We need your support, and don't push the bell icon, don't forget push the bell icon, my dear friends. I don't know, I hope you will do, and you would give help to me, because there are nothing to permanent. Everything is change in your life. You must know that at this time. If you are giving time at yourself, if you want to do well in your life, you must focus. I hope one day you would change everything and you would achieve who you want in your life. My dear friends, my dear brother and sister, if you are giving time in your book, this book would not down your head in your life. You must know that, never. And you must always work, ever you must work for your ambition. थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू लॉट ऑफ अस. यदि मैं बातें करता रहूँ तो मेरे पास वर्ड नहीं खत्म होगा. इफ वी आर टॉकिंग, देयर इज नो वर्ड टू फिनिश ऑफ माई टंग. आई डोंट नो डेट, बट वह आता रहेगा. ही विल कम एंड आई विल गेट स्पीक. मैं बोलता रहूँगा एज, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि हो रहा है वीडियो लॉन्ग. एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू कैन डू वेल इन योर लाइफ. थैंक यू. जय हिंद.